for joining us today on a Sunday morning. Our first session for today is titled as Birds of Lucknow, Sanjay Kumar, Neeraj Srivastava and Bhalu Mondhe ji in conversation with Mr. Abhilash Khandekar. Mr. Sanjay Kumar is a serving bureaucrat from the 2002 batch of the Uttar Pradesh cadre. He is presently posted as Secretary Finance to the government of Uttar Pradesh. He is an ardent nationalist, a passionate wildlife photographer. He has several articles, books, and stunning photographs to his credit. Some of his works include Conservation of Potential Wetlands in District Sitapur, Threatened Birds of Uttar Pradesh by Oxford University Press, Birds in and around Mussoorie, and many more. Our next guest this morning is Mr. Neeraj Srivastava. He is an observant traveler, a wildlife enthusiast, and a writer. His contribution to in the form of lecture presentations, events, articles, photographs, and books is well acknowledged and recognized. He has also authored and co-authored various books on birds and nature so far. Some of the titles are Conservation of Potential Wetlands in District Sitapur, Birds of Rajbhavan, Uttar Pradesh, published by State Biodiversity Board, Uttar Pradesh, and many more. Last up we have Mr. Bhalu Mondhe, who is founder of the Nature Volunteers and is an avid nature photographer. He has written a number of books on birds, including Birds of Indore. He is a Padma Shri and is a well-known artist of the country. In conversation with them, we have with us Mr. Abhilash Khandekar ji. He is a veteran multilingual journalist standing close to a rich 40 years of experience in print and electronic media. May I please call upon on the stage our dignitaries and request you all to please initiate the conversation. Hello. So good morning and thanks for coming on a Sunday morning for listening to something about birds, ornithology, wetlands and the ecological issues that are being led in this session mainly by Shri Sanjay Kumar ji, who has written a beautiful book on birds of Lucknow, and Mr. Bhalu Mondhe, who has produced Birds of Indore. So this is a unique session in the sense that there are 4 authors and all panelists are in some way or the other associated with birds, and they have brought out books on their cities, that is Birds of Lucknow, and Bhalu and I come from Indore, so Birds of Indore. And this is going to be an interesting talk as far as birds are concerned. And the importance of birds, as we all know, is increasingly growing, and people, that is basically the bird watchers, are also growing in numbers, taking cameras or maybe cell phones. But what is important is that documenting the various species of birds. So I'll start with the first question to Sri Sanjay Kumar ji, who is my old friend.
He is a senior IS officer in government of UP, but he takes time out for nature conservation and has been doing great job. So I welcome you to this session of Bhopal Literature Festival, of which I am also an organizer, but I am wearing different hats. So welcome you both, Srivastava ji. Thank you for coming all the way from Lucknow, and we are really happy to see this book which you had sent me last year. And I would like the audience, for the interest of the audience, to you to tell me what inspired you to write about the birds of Lucknow. It's such a beautiful, profitable book, and what all are the contents of that. I know, but for the audience, I would like you to start the morning with. Thank you, Abhilash, and a very good morning to everyone who's present here to listen to us for this discussion. Mr. Mondhe and my co-author Neeraj. And first of all, I would just give you a background. It all started many years back when I was a school student, and I studied in a boarding school in Delhi, and my principal was a colonel from the army, who was from the education corps, and he believed tremendously in taking us out for outdoor activities besides regular off academics. So a lot of trekking, lot of walking, lot of cycling. We cycled from Delhi to Ajmer, 12 days affair. That was in '93, and a lot of such events, made me go much more closer and observe nature. And it all started with this. The seeds were sown long time back when I was in school. I was part of the nature club. I was part of the adventure club. Continued the same when I was in college, in Delhi University. And later, when just after the college, finished my college, I was lucky enough to get into the service early. And I continued there. And coincidentally, there was a nature club in the LBSN Academy, Missouri too. So I was secretary of the nature club there as well. It's quite a music to my ears. Correct. And I kept that the passion for exploring new places, exploring the new species and animals, and taking and as well taking my batchmates, or college and schoolmates, and telling them about them. It all started with that. And then I wrote my first book in 2014 as The Birds of Missouri, based on my trekking experiences, what I had during my training periods from 2002 to 2014. And then The Birds of UP came. Birds of UP, yeah. UP, that was the dream project of XCM. And I contributed in forms of a lot of photographs and text. Neeraj ji was also part of it. And then when I was posted out after my field postings in different districts of UP, and when I came to Lucknow, I was just cutting through if we have some documentation of birds of Lucknow. I found some little bit write-ups and some text, some reports in old journals by some British officers. That was also a little vague. I couldn't get hold of it. So that is when I decided, this was in 2008, 19 to be precise. The work started. We made a lot of surveys. There were a lot of good bird watchers, nature lovers in Lucknow. And this is how it started. We started documenting it, and luckily the publisher, when we told the story to the publisher, they were not very keen, doing many books on nature, wildlife, and such kind of books. But the moment they heard us, and he jumped into the bandwagon of, this is the book I'm going to publish, even before you could show him a dummy. Okay. And this is how it came about. And we made a lot of explorations in Lucknow. Idea was, Lucknow is a huge city. Lucknow has a population of easily above 50 lakhs, crossing 50 lakhs. 50 lakhs. Now, the idea was, if we document the beautiful world of feathered friends, the birds, the feathered bipeds around us, it is so easy to encourage, inspire the young generation who sees the pictures. Most of it, one picture, one photograph is worth 1,000 words, we say. And this is what it is. And this is what I have grown up seeing it. The more you see, the more you appreciate.
aspects of beauty of the bird you begin to appreciate. So this was the logic. Let's document it. Let it reach out as many hands and people, libraries and all. And I'm happy to share that this is a city-centric book. It is available in online. It is in major stores in Lucknow. Amazon पर भी available है. And we managed to sell around almost 1,800 copies in Very good. last 1 month. Give a big Which hand is for that. pretty happy because for given a small city-centric book. Yeah. So over to Bhaluji. This book came in 2021, I think. 21. And The Birds of Indore was brought out, मेरे ख्याल से 2019-20 में हमने निकाली. तो बर्ड्स ऑफ इंदौर की क्या खासियत है? बिकॉज ये दोनों किताबें जो हैं ये अर्बन बर्ड्स के बारे में बात करती है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स. बिकॉज हम इसको नॉलेज कुंभ कह रहे हैं. भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल इज़ ए नॉलेज कुंभ. तो संजय जी, करीब 1300 स्पीशीज़ के बर्ड्स हैं देश में, भारत में अराउंड 1300. तो भालू जी, आपने इंदौर की बर्ड्स के बारे में जो किताब निकाली है उसकी क्या खासियत है? उसकी खासियत ये है कि उसमें इंदौर एंड सराउंडिंग है, करीब 25 किलोमीटर सराउंडिंग ऑफ इंदौर सिटी. इंदौर पॉपुलेशन 35 आई से लैक्स राइट नाउ अंदाज़ा. उसमें अर्बन लेक का भी 6-7 कवर है. उसमें हमने अर्बन लैंड का भी डॉक्यूमेंटेशन किया है. उसमें छोटी छोटी गाँवों का भी उसमें डॉक्यूमेंटेशन है किताब में. वेटलैंड्स का उसमें जहाँ जहाँ बर्ड है वहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है. 267 बर्ड अभी किताब में है डॉक्यूमेंटेड, फोटोग्राफ्ड. अभी 290 है इनफैक्ट. वो मोर बर्ड आर सीन नॉट इन द बुक. तो 290 नंबर जा रहा है अभी. तो इट इज़, आई थिंक, आई विल से इवन रवि जी से मैं कहूँगा कि इंदौर इज़ क्वाइट रिच इन दैट के. और करना काम ये है कि अब लोगों को अवेयरनेस ला के उसको संभालना है. इस मोर हैवी टास्क है. उसको मतलब क्लीननेस, पीस चाहिए वहाँ पे. सब हर लेक वेटलैंड पे ये बहुत जिम्मा हर एक आदमी का है. वहाँ जो लेक के पास रह रहे, यूज़ करते लेक का पानी, उनके लिए बहुत इंस्ट्रक्शन है. और हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आगे बढ़े, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ कोर्स नेचुरल वी नीड ऑफ कोर्स. On our own it is not possible. I would like to remind you about your own success, that is our own success. In the last year, August, 2 of Indore's wetlands have got Ramsar site. Ramsar site. So that is something that is the idea of bringing out books and documenting these avian species is not only just showing the colors and the habits or the names and birds, but also the importance of इकोलॉजी. तो नीरज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बर्ड्स ऑफ लखनऊ में जो आपने प्रयास किया है उसका क्या फीडबैक है? बिकॉज अल्टीमेटली वी आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऑन बर्ड्स आर देयर इन दी दिस, लॉट ऑफ पीपल, एंड एवरी टाइम वी गेट टू सी न्यूअर थिंग्स. तो बर्ड्स ऑफ लखनऊ पे वापस जाते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अर्बन बर्ड्स का और बर्ड्स की इस तरीके से किताबें लाने के बाद में उसकी अगली स्टेप क्या है? हमारे ये जो भालू जी जो कह रहे थे कि हमने वेटलैंड की जो प्रोटेक्शन के लिए भी उसमें कुछ टेक्स्ट और उसका फोटोग्राफ्स इंक्लूड किए हैं कि दैट वी हैव कवर्ड सर्टन वेटलैंड्स, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेटलैंड्स व्हिच आर वेटिंग टू बी protected. So how about Lucknow? See, in urban landscape, it's every time it's very challenging to retain the existing ecology. In fact, the coexistence is always challenging. It's an issue कि urban wetland में ever expanding wetlands. Lucknow is no exception. Lucknow is spending at any speed, और कोई भी city या कोई भी state capital is expanding. So मतलब we can recollect कि लखनऊ में जो वाइल्ड लाइफ पोटेंशियल वाइल्ड जो एरियाज होते थे, बर्डिंग एरियाज, आई एम रेफरिंग टू द वेटलैंड्स. इन फैक्ट अभी भी कुछ साइन बोर्ड्स हैं, और जो अभी ओल्ड साइन बोर्ड्स आर देयर जो इंडिकेट करते हैं कि देयर वाज ए वेटलैंड फॉर सम टाइम. एंड द ओल्ड रिकॉर्ड्स, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द ओल्ड बुक्स, ओल्ड अकाउंट्स ऑफ द, उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता था. गैजेटियर्स में बहुत सारी चीज़ें मिलती. टू फाइंड आउट देयर. तो बट नाउ दे हैव ऑल कन्वर्टेड टू द कंक्रीट जंगल. ठीक है. So documenting urban, it's a sort of ecological assessment or audit of a urban landscape. So bird areas, yes, birds are the bioindicator. Birds are termed as the bioindicator of the area. So idea is to कि जो birds आपके urban landscape में अभी हैं, even saras was breeding. Saras used to breed in the Lucknow city.
जहाँ पर सारस ब्रीड करता था. Now the place is within the municipal area. There is no saras now. Saras has been replaced by the concretes. Oh my God. So yes. That is happening in fact all the cities, I think, Yeah, I believe. all the cities. And second thing, what we notice ki it's this Mother Earth is like us, like humans. When we eat, when we select a balanced diet, but in the case of the Mother Earth or the Earth, we never consider. See, the pattern which we are trying to replenish the green cover is absolutely deadly and suicidal. We vehemently chopped away, removed the old trees, old native trees, and replaced them with the exotic varieties, palm varieties. Today morning, we were on the stroll in the Bhopal city. So it's very painful sight, for me at least. We saw a lot of palm varieties are there, lot of exotic. Exactly. Yesterday, while I was discussing this cities and canopies book with Seema, who had come from Bengaluru, and in this very hall, she was also trying to say the same thing, that because that book is about trees and cities, Yeah. and she has written extensively about various species of trees, and everyone is noticing that old trees are being cut down, about 60, 70, 100-year-old trees, and new palm trees on which no bird goes there, it has no shade, it has no flowers, and nothing but this kind of urban plantation is happening, and we all should try to evolve some kind of a formula. Sanjay ji, आपके पास है, you are a bureaucrat, serving bureaucrat. So, in the central part of this country, shade is the third largest issue after water and air. This is going to become the third largest concern, shade, because we have removed shade from all over the country in the name of big 4-lane, 8-lane, 16-lane. So this is going to be there, sir. Please. Abhilashi, there are 2-3 things I would like to share based on my experience as an administrator. The pace at which the destruction of wetlands, especially in the urban landscape, is happening is just not imaginable. It is the rate at which it is just going off the map, off the radar, is tremendous. In matter of what used to happen in 15 years is now happening in matter of few years, 1 year, 2 year and 3 years. The rate, because urbanization is increasing. Last 15 years, the urbanization of UP has 10 years, if you say to last 10 years, it has increased by almost 15%. And going by 2030, UP will be almost 40%, 45% urbanized. The population of UP will be living in urban centers. So we have got 687 urban local bodies in UP. And this is growing. Next 5 years, we'll have another 300 added, 1,000 plus. So the issue is, first, we need to be very clear. First is from the heritage data we have, the satellite data we have, 70 से कम authentic data है हमारे पास. उस data से हमको collate करके एक जो wetland है उसको हमको identify करके water bodies को हमको restore करना होगा. दूसरी चीज़ कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, which is absolutely related, is कि आपने wetland restore कर दिया, but it is in the middle of an urban jungle. There is no inlet, there is no outlet, all the drainage and the natural seepage of water जो connect है underground water का, that is lost. Now that is also something which needs to be looked into. You just can't make one single pond from restoration के नाम पे and that's it. It will never work. It will never happen कि वो वाकई में restore कर ले और biodiversity वापस आ जाए वहाँ पे. So these two are very very important. तो बालू जी, क्योंकि आपने जो 2 रामसर साइट के लिए पिछले 30-40 साल से झगड़ के काफ़ी इंदौर में वो किया, तो यशवंत सागर और सिरपुर लेक अब रामसर साइट हो गए हैं, तो वो बर्ड के हैबिटेट्स हैं. हमारे यहाँ भी सारस है, सब इंदौर में थोड़ा सा. बट भालू जी हैड गॉन टू दैट साइफाई कॉन्फ्रेंस ऑफ सारस प्रोटेक्शन जो असद रहमानी साहब ने और उन्होंने जो लीड करी थी 2016. That must be the bird festival. No, it was a सारस the sci-fi में सिर्फ वो crane call. So it was very heartening to understand that the Chief Minister then Akhilesh Yadav had led the or had
taken the lead to organize this kind of a bird festival, this kind of Saras festival, crane festival, in which he had gone. तो जो आपने मुद्दा उठाया वो इंदौर में भी शायद है या नहीं है, ये आपसे सुनना है कि क्या वेटलैंड्स आर श्रिंकिंग और बर्ड्स आर थ्रेटन्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन इंदौर? माइक. All wetlands are mostly, of course, belongs to government, some state government, central government, whatever it is. But there, after our documentation and data, they recognized, or government recognized, these are very good for birds and biodiversity and all that. On that, they want to develop their way of engineering part, and that is destroying the whole landscape, whole उसका वेट प्रोसेस का जमीन का पूरा प्रोसेस. दे वांट टू बिल्ड एंड बिल्ड एंड बिल्ड, दैट इज दे वांट टू मेक ए बाउंड्री वॉल, then they want to make a lighting, cameras and things. I mean, they and are cement concrete more they or less. want more people there, and people comes, then they want खाना पीना होता उनका, फिर ठेला, फिर पानी पता से. हमारे इंदौर का खासियत है कि हर जगह पानी पता से की लाइन लगती है, मतलब चौपाटी हो जाती है वो. उससे जो गंदीवाड़ा है वो सब तालाब में इनडायरेक्टली आ ही रहा है वो. और हाउ, आई मीन, दे वांट टू सी बर्ड और दे वांट टू हैव ए ईटिंग प्लेस और पिकनिक प्लेस. ये कंफ्यूज्ड है अभी उनको. तो हमेशा ऑल प्लेसेस आर दे वांट टू हैव ए चौपाटी. सरकार का और कुछ नहीं इंटेंशन, उनको लोगों को इंटरटेन करना है. एंड एनवायरनमेंट वाले जो लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छा रहे, क्वाइट रहे, तो वो एक अगेंस्ट फाइट चल रही है. बहुत टफ फाइट है अपने लिए हमेशा. So I believe that conserving an urban wetland is a huge challenge. And despite the wetland rules and newer and newer regulations, somehow the urban bureaucracy is not able to understand the importance of ecological conservation or the biodiversity conservation. Would you like to comment on that? Yes, to I some don't want extent. to put you in a fix, but No, we are here talking about birds and ecology and environment. मैं उसी से रिलेटेड मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जितना कि स्कूल कॉलेज के बच्चों को या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ और इस तरह के जो प्रो एनवायरनमेंट लोग हैं या प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनका रोल इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू train, to educate and to motivate and teach the methodology which needs to be applied for restoration of wetlands to our engineers, to our administrative officers, to right from JE to executive engineers, to irrigation department के लोग, PWD department के लोग, जल निगम जो handle करते हैं, जो sewage management का काम करते हैं. Now as a bureaucrat, I have succeeded in many places only because I started catching them. They were never out of my radar. They were part of my whole team. Very good. And this is the key. I am telling you. आप कितना भी अच्छा प्रेशर बना लीजिए, कितनी भी अच्छी सोच कर लीजिए, if the planning of which the government is the implementing agency, अगर उनकी planning में ये गड़बड़ी आ गई, if they start using brick, mortar and every kind of things to make huge, lovely estimates of running into hundreds of crores, then that's the end of the story. So under the leadership of Bhalu Mondhe, who is the president of Nature Volunteers, in last August we organized for the first time an urban biodiversity conservation conference at Indore. Ravi Singh ji had lent support to us, and in that our effort was that to bring in the CEOs of smart cities, PWD chief engineers, some of the IAS officers. And I can tell this house that while they were leaving the conference after 2 days, many of the young IAS officers came up to me and said कि सर हमको अब पता लग रहा है कि एनवायरनमेंट क्या है. एंड आप कह रहे हो कि मसूरी में आपने सारी चीज़ें देखी, बाकी लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि वही लोग पॉलिसी बना रहे हैं. और अर्बन कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, एंड ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट समवेयर ओपन ग्राउंड्स एंड नेचुरल habitats have to be secured at any cost, because keeping an open land is also a kind of development. Neeraj, would you like to say something about it? They have to take care of it only. Municipal corporation और जो भी concerned people हैं, जो town planning या उससे associated हैं, they are the उनको इसके लिए करना चाहिए. Recently अभी 1 महीना पहले मैं UK गया था, तो I stayed in London.
तो मैं मेरा जो फोकस भी था हेरिटेज एंड नेचर पर, तो आई यूज टू विजिट लंदन वेटलैंड सेंटर. इट इज़ केयर्ड बाय वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट. तो इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द लंदन सिटी. एंड जो भी बर्ड्स हैं वहाँ पे, जो वाटर बर्ड्स हैं, दे आर इन कैप्टिव ब्रीडिंग. सब कैप्टिव ब्रीडिंग वहाँ पर होती है, सक्सेसफुल ब्रीडिंग होती है. सो जो मैंने वहाँ पर 2 बार आई विजिटेड द वेटलैंड साइट ट्वाइस. मैंने देखा वहाँ पे वन डे वेदर वाज नॉट कंड्यूसिव, सेकंड डे फिर गया मैं वहाँ पर. सो गवर्नमेंट का वी हैव वेरी गुड सेट ऑफ रूल्स वहाँ भी हैं, ठीक है, बट कैसे फॉलो करना है. एंड व्हेन इट इज़ नेचर रिलेटेड थिंग्स, परफेक्टली उन्होंने उसको वेटलैंड को बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही आई मीन जो रूल्स या जो एकेडमिकली जो प्रोटोकॉल है, जो वॉट एवर प्रोटोकॉल इज देयर, दे फॉलोड इट. और इट इज़ I mean from every angle for visitors, for conservation, for motivation, awareness, for everything. It is an ideal place. So, sorry. So and one thing, when I visited there, I stayed there for 2 weeks. So I clearly it was in my mind कि natural wealth, we are 1,000 times ahead of them. We have plenty of places which are far. I mean, No, of course, India is very but rich in biodiversity. how to care them, how to value them, it is a question. So there is nothing. So question comes back to the same thing, that do books like Birds of Lucknow or Birds of Indore, do they trigger some kind of curiosity, some kind of teaching, some kind of learnings among those who are not into the world of ornithology or nature conservation? इससे फर्क पड़ता है कि नहीं? बहुत फर्क पड़ता है. एंड आई विल गिव यू अ वेरी पर्टिनेंट एग्जांपल बस रिलेटेड विद दिस. This book was published 1 year back, and the Chief Secretary of Uttar Pradesh released this book. Along with, there were a lot of, I definitely ensured the officers from the urban development, the ACS, urban development, the irrigation, the PWD, the finance, all related people, they were invited. And luckily all my senior officers, they came. And after this book was released, 15-20 days later, I just threw an idea. We have a beautiful wetland in the next to river Gomti, which is popularly called as Ikana wetland. And sir has the team of WWF has been now part of it. So we threw an idea कि now उसमें जलकुंभी है, उसमें encroachments है, उसमें duplicacy of land है, कुछ गांव है, कुछ खेत है, और we need to really restore this wetland. This is next to the international stadium, which is the Kana Stadium, the newly built Kana Stadium. So there was a joint visit by the ACS of the department. He has led from the front. Now we have initially the project was worth 10 crores with lot of concrete work. Then we sat, Asad Rahmani Sahab, Neeraj ji, we and the team of WWF, we all sat with them and said, no, we don't need this pakka and CC Exactly, road that work. is what Mr. Bhalu Just Mondhe need, was hinting and at. some local plantation. We gave them an idea of 5 basic principles of wetland restoration, which can be implemented easily whether in rural or urban areas. पहला है कि de-weeding और de-silting का काम करना है. De-weeding का मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ ही साफ कर दिया. आपको कुछ छोटा मोटा जलकुंभी छोड़ना है, छोटा मोटे जो weeds and grass and narcoles, they have to be left like that. They are breeding grounds and they are safe havens for many birds. Secondly, आपको वहाँ पे जो गंदे पानी के जो स्रोत हैं उसको ट्रीट करके ही, आपके यहाँ पॉलिसी है, आपके बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको ट्रीट करके उसको पानी को डालना है. तीसरा, उसका डिमार्केशन बहुत ज़रूरी है राइट फ्रॉम डे वन. द डे यू स्टार्ट कंजर्वेशन, फर्स्ट थिंग इज डिमार्केशन इन द फॉर्म ऑफ सम परमानेंट पिलर्स एंड बंडिंग. उस बंड पे जो सिल्ट निकल रही है उससे आप बंड बनाइए, कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत है लाइए, एंड लोकल स्पीशीज़ का प्लांटेशन अलॉन्ग द बंड्स, बिकॉज वेटलैंड्स में बर्ड्स भी आएंगी और जब आपका मानसून सीजन होगा तो जो लोकल जो स्पीशीज़ आएंगे वहाँ पे आपके देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर भी ब्रीडिंग के लिए नेस्टिंग भी होगी. सो दीज आर द 4-5 थिंग्स विच यू नीड टू डू. इनलेट और आउटलेट आखिरी चीज़ है. जो भी वेटलैंड है उसका एक इनलेट का स्रोत होगा, एक आउटलेट का. जब भर जाएगा बरसात में या जहाँ से कहाँ जाएगा?
आपने बना दिया, सब एक रिस्टोर कर दिया, उसका निकलने का रास्ता ही नहीं है, एवरीथिंग गोज वेस्ट। तो बालू जी, आप ये बताना चाहेंगे कि इंदौर में जो तालाब, या पहले भी जो तालाब बनाने का जो टेक्निक था, क्या था? मुझे मालूम नहीं, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लेकिन इंदौर में ये कहा जाता है कि जो 7-8 वेटलैंड्स है वो अलग अलग ग्रेडियंट पर लोकेटेड हैं। ऊपर एक तालाब है, वो भरने के बाद नेचुरल पर्कुलेशन या नेचुरल उससे नीचे वाला है, और इसका तो सिरपुर, तो इस तरीके की जो बातें हैं ये आज के इंजीनियर्स या एडमिनिस्ट्रेटर को समझ में आ रही है क्या? कैसे समझाया जाए उनको? को समझाने वाला ही नहीं है। दे वांट ओनली इंजीनियरिंग पार्ट। दे सर्वे करते नहीं करते, उनको तो जमीन दी जाती है और गड्ढा करके पानी आ जाएगा, ये है उनका हिसाब। आई डोंट नो हु कंट्रोल्स दैट कंटूर एंड ऑल दैट। उसका कोई सर्वे नहीं है। दे एक्सपर्ट सिटी में आसपास रहते हैं, वहाँ पे किसी भी 50 किलोमीटर में एक्सपर्ट से कोई समझने को तैयार नहीं सरकार। दे डू देयर वे ओनली, नो लिसनिंग फ्रॉम एनी एक्सपर्ट्स। जलकुंभी जलकुंभी तो इतनी भरी है, अभी कहीं कितने तालाब तो खत्म हो गए, और हमारे यहाँ तो मतलब 12 तालाब में से अभी 5 तालाब जिंदे हैं। 7 तालाब में कॉलोनी खड़ी है, अर्बनाइज्ड हो गया है टोटल, जलकुंभी से भरे हैं, नो यूज ऑफ वाटर, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है। और स्टिंकिंग, फिर मच्छर का वो है ढेर। तो वो इनटेक और आउटटेक की जो बात है, जो इनलेट और आउटलेट, वो बंद है कर दिए, आउटलेट वगैरह सब बंद हो गए, इनटेक भी कुछ है ही नहीं। अब वो अर्बनाइज पेविंग और सब कर दिया है आपका। छोटे छोटे लेके उसको ब्यूटिफिकेशन कर सकते थे, अभी भी स्कोप है, पर झाड़ से नहीं होता है वो। इनका डेंटिंग, पेंटिंग एंड स्टील आ गया, कांच आ गया उसमें, ग्लास। So I believe there is a huge and strong nexus between engineers and local contractors in all the cities who are interested only in brick and mortar and cement work. तो कमिंग बैक टू बर्ड्स, कि हम बर्ड कंजर्वेशन के लिए, अब हमारा इंटरनेशनल जो फ्लाईवे है उसके बारे में लोग बात करते हैं, सिटी बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं आप और हम लोग, पर ओवरऑल व्हाट इज द सिनेरियो इन द कंट्री कि एक फाल्कन, जो अमूर फाल्कन कहीं से आता है, तो पुणे के पास में मिला, तो सैकड़ों फोटोग्राफर्स वहाँ गए और 2-3 दिन तक पड़े रहे वहाँ पर, और दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी quietness or the privacy that bird requires. So would you like to say something about different species of birds that you have covered in your books? Yeah, in Lucknow I've documented around 250 plus species, and documentation का एक और बहुत important चीज़ होता है कि it's not a one time affair. If I have done it today, it inspires many other people to add new birds to the checklist of the species which are found in Lucknow. And same applies everywhere. So it's an ongoing process. There is a document in place, but then that's not the end of the road for it. पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि even after publishing this book, we have spotted another 8 species, added 8 species in the last 1 year. Precisely. So this is what I'm trying to say, कि it's an ongoing process और वो बढ़ता जाता है। ये जो इन्होंने कहा कि 267 बर्ड स्पीशीज इन दी बर्ड्स ऑफ इंदौर, उसके बाद गोपी सुंदर इंदौर आए हमारे एक एनुअल एनवायरमेंट लेक्चर में, 2 दिन घूमे, उन्होंने 3 स्पीशीज नहीं पकड़ के दिखाई हमको। Absolutely. यार आपके फोटोग्राफर्स और आपके ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं पकड़ पाए। आई हैव, सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस And timing, it's a very very tough job. And there is a good connection, looking at the book of yours. There is a very good connection between the birds of Indore and the birds of Lucknow. Can you guess? The same bird arrives from Indore area, the central part of India, The paradise flycatcher. to the North Indian, the Tarai part of Uttar Pradesh in the month of end of March, end of April and May, and it breeds there also. Oh, very good. This is the paradise flycatcher. It comes there. You got another beautiful bird. So this paradise flycatcher, for many of you may be knowing, maybe may not be knowing, but this is the state bird of Madhya Pradesh. And therefore we had put it on the front page of this first book on the city-centric book. But we are also planning birds of Bhopal, and I am thinking what will I put it on the front cover, because the state bird has already. There is another very beautiful bird which you can think of, I can suggest. Yes, sir. Which comes from this part of the country, the central and the Deccan Plateau to the northern part. That is called as a very beautiful bird, one of the real beautiful bird that is called as Indian Pitta. We call it as Navrang. It has got 9 colors. It's a very small. We call it as a color bomb. Color bomb. It is full of colors and it's really pretty. So just a suggestion for birds of Bhopal,
That can be your icon. तो बालू जी, आप बर्ड्स ऑफ इंदौर के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? हम स्कूल में भी पूछते हैं, मतलब एक छोटा वो है कह रहा हूँ मैं आपको कि स्कूल में हम किताब बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो दे डोंट नो इवन द बर्ड्स, मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड। उनको नाम तो चाहिए दूधराज, उसका हिंदी नाम है। इट इज़ नॉट इन द करिकुलम दैट बर्ड्स ट्रीज, उसका आइडेंटिफिकेशन ही हो पा नहीं रहा है। जंगल के पास भी विलेजेस में स्कूल्स है, वहाँ पे भी नॉलेज नहीं है उनको। तो एजुकेशन में ये रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए कि ये छोटे किताब निकालना चाहिए, 10 पेज की किताब, और वहाँ पे लोकल जो है वो उनको सिखाया जाए। अब ये क्लोजअप जो देख रहे हैं अभी आप, ये क्लोजअप सिर्फ फोटोग्राफ से देखिएगा, नॉर्मली यू कांट ऑब्जर्व दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। बालू साहब ने जो बात कही बहुत ही वैल्यूबल है, एंड आई वुड सजेस्ट कि पीपल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन आर देयर और एनी नॉन गवर्नमेंट एजेंसी पीपल आर देयर, हम लोगों को टारगेट स्कूल कॉलेज के बच्चों को कैसे करना है, आपको विजुअल ट्रीट देना है उनको। विजुअल ट्रीट मीन्स बहुत ज़्यादा आपको किताबों में जैसे लिखा रहता है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वो पढ़ने में ज़्यादा वन गुड फोटोग्राफ एंड जस्ट राइट ब्रीफली अबाउट दैट बर्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे स्कूल, मेरे ज़िले के या मेरे जो क्या नाम है स्टेट के जो बच्चे हैं, 5वीं तक के बच्चों को ये 50 चिड़ियों की पहचान होनी चाहिए। हमने फिजिकल एजुकेशन को एक अपने करिकुलम में लिया, उसी तरह से हमने एनवायरमेंटल साइंसेस भी ले लिया है। वी हैव टेकन, मेनी स्टेट्स हैव अडॉप्टेड दैट, बट उसकी डिटेलिंग, फाइन डिटेलिंग कि हम 3री क्लास तक ये पढ़ाएंगे, 4थी में ये हम वैल्यू ऐड करेंगे एनवायरमेंटल साइंस में, 5वीं में हम ये ऐड करेंगे। We are introducing cheetah, the story of the success of the cheetah, the story of the success of rhino reintroduction in, say, Dudhwa, the story of conservation success of Asiatic lion, and many more such things. These success stories और even need to be tiger told. conservation for that matter. इतने सालों में और जब नीचे जा रही थी तो क्लास वाइज हमको ग्रेड इंक्रीज करना चाहिए। 4th, 5वीं, 6ठी मैंडेटरी कि 5वीं तक हमारा 50-100 स्पीशीज जाने बच्चा, उसमें से हो सकता है ना जाने, बट ही इज एबल टू। जब हम एग्जाम में बच्चों से सम मुश्किल और हर तरह की चीज़ें हम पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, व्हाई कांट वी आस्क डिजाइन अ क्वेश्चन फॉर आवर चिल्ड्रन एज पार्ट ऑफ दिस द एग्जामिनेशन पेपर और टेस्ट फॉर एनवायरमेंटल साइंसेज। एक पिक्चर दी हमने चिड़िया की, बोल के आइडेंटिफाई द वर्ड्स, 4 ऑप्शंस, ही विल स्टार्ट द चाइल्ड विद, और उसको फील्ड विजिट। दूसरा है मैंडेटरी नेचर क्लब इन एवरी सिंगल स्कूल, एंड नॉट ओनली कागजों में, उनको बाहर ले जाना है, आउटडोर दिखाना है। आज बहुत से शहर के बच्चों से पूछो, मैं जब बरेली का कलेक्टर था, आई वेंट टू वन वेरी रिप्यूटेड स्कूल, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन बरेली, दिस वाज इन 2015, एंड आई आस्क्ड कि बच्चों आप लोगों में से कितने लोगों ने रामगंगा नदी देखी है? आई थिंक जस्ट 1 or 2 आउट ऑफ द क्लास ऑफ 50 बच्चे थे उस क्लास में, 9वीं क्लास के बच्चे थे, सिर्फ 1 या 2 बच्चे ने हाथ उठाया। और मैंने बोला कि बेटा कैसा देखा? ही सेड हम गाड़ी से जा रहे थे तो हमने गाड़ी देखी। पीपल हैव नॉट वॉच्ड, दे हैव नॉट टच्ड द वाटर, दे हैव नॉट फेल्ट द सैंड। तब कैसे आप उनके प्रति जागृति? बच्चे थे, हम जब मिट्टी के साथ खेलते थे या नदियां पार करते थे या तालाबों पे जाते थे, भले ही हमको उस समय बर्ड स्पीशीज के बारे में ज़्यादा, आज भी बर्ड स्पीशीज को समझना इज़ ए वेरी टॉल ऑर्डर, मतलब मेल, फीमेल, जुवेनाइल और इतने 1300। सो बट कहने का मतलब ये है कि वो टच भी बच्चों का ख़त्म होते जा रहा है, और देयरफॉर यू सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर क्लब हर स्कूल में होना चाहिए और कागजों पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है NEP, उसमें एक देर इज़ अ कंपोनेंट अबाउट नेचर क्लब्स इन कॉलेजेस। तो हमने उन कॉलेजेस से कहा कि वी वुड लाइक टू डू MOU नेचर वॉलेंटियर के साथ में, गुजराती कॉलेज का करना। तो उनका सब हमारे पास ज़्यादा बच्चे नहीं है, तो उनका कि हमको तो सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप उनको सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैंने कहा हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे unless they come and see for themselves and regularly, not once and you saw and कि आपने कहा कि ये पैराडाइज फ्लाई कैचर है या आपका गोल्डन अरियल है या एनीथिंग, और वो घर चले गए, भूल गए। तो आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल स्टूडेंट्स टू बी बर्ड वॉचर्स, लेकिन नेचर कंजर्वेशन के लिए कुछ ऐसा फार्मूला होना चाहिए। क्योंकि देवी भानु सिंह भी सामने बैठे हुए हैं सर, तो आज भी हमारे यहाँ पास ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, उनको लेपर्ड, टाइगर, चीता और इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आता है।
let alone the bird species, what to do? But we had, which means that the task is on Neeraj ji, you and people like you who have been bringing out books, and Bhalu ji, कि जिनको समाज में ये जन जागरण के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि बर्ड्स नहीं बचे, बीज नहीं बची, बटरफ्लाइज नहीं बची, ट्रीज नहीं बचे, तो फिर हम कैसे बचेंगे? So would you like to comment on that? Sir, observing birds or any other species in the wild is something observing the nature rather. A bird, how it flies, what it eats, rather, or there are a number of things. So when you are looking up to a bird, you are looking up to nature. So unless you understand what a bird is all about, or what the nature is all about, you will not be able to conserve it or admire it rather. This is what I say. हम लोग सब जानते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ को. Each one of our modern discoveries, not discoveries, the new innovations and inventions, so called, is inspired by nature. Japan जैसी technologically advanced country, a small kingfisher inspired them to make the fastest train, which runs at the top with speed of 350 to 370 kilometers per hour. You mean to say the kingfisher's beak is such that they have minimum that design because minimum for the bullet train. Correct. Minimum resistance के साथ कैसे वो dive मारे, मछली पकड़े, and then rises up and comes up with minimum spending minimum energy, resistance. Same applies to the best of the fighter aircrafts which have been built. आपने Peregrine Falcon का सुना होगा? All these Falcon and Dragon series of, they're all inspired by the birds. All these big aviation sector के वो सारी चीज़ें. तो मेरा ये कहना है, the plumage, the color, can we see, जो हम लोग न hot couture or all kind of designers, there everyone is basically taking a cue and inspiration from the nature. Beautiful words. तो मेरा ये कहना है कि जब हम डेली बेसिस पे इंस्पिरेशन आसपास हमको नेचर से ही मिल रहा है, तो इट इज टाइम टू रियली सो द सीड्स वेरी अर्ली in the youth and at every level in order to get fine results. So I got about 5 minutes. अभी आपने जापान मेंशन किया, तो जापान में मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, पर वहाँ पे बच्चों से अपना क्लासरूम, टेबल, टॉयलेट तक सफाई कराते, बच्चों से कराते वहाँ पे, मतलब टर्न बाय टर्न कराते. वो हजार बच्चे, जहाँ 4,000 बच्चों का स्कूल है. अपने यहाँ पे अपन क्यों नहीं गार्डनिंग, पूरा गार्डन का परिसर बच्चों से क्यों नहीं कराए हैं? मतलब ये एक शुरुआत करे कोई, तो उसका फॉलो अप होएगा. इस तरह की चीज़ यहाँ पे पर्यावरण में उनको मट्टी से खेलने मिलेगा, और उसका झाड़ उसको 2 साल बाद फूल देगा या फल देगा, तो उसको देखने मिलेगा. 10-10 साल बच्चे एक स्कूल में हैं, तो वो 5 साल से यदि झाड़ लगाए तो उसको 12वीं तक, मतलब 6-7 साल तक वो अपना झाड़ को नरिश करे, और उसको सब उसका फल फूल मिलेगा. It will be a nice thing for him, or he will be proud. तो ऐसी सिस्टम अपन चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसको कहते हैं रियल लाइफ लेसन्स, जो बच्चों को रियल लाइफ लेसन्स ना, बच्चों को सिखाना, करना, एक्सपोज करना. So we have got a range of people to be taught or made aware or conscious about, from bureaucrats to the school children. It's a huge task for all of us to, even at one point of time, Ravi, you may like to recall, आई हैड प्रपोज कि भोपाल में जुडिशियल एकेडमी है, वहाँ पर जजेस आते हैं, उन लोगों को भी हम कुछ वो करने का बातने की बात करें कि जब कोर्ट्स में केसेस जाती है, एनजीटी जब बात करता है, तो उन लोगों को भी पता लगना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग. तो वो तो सामने जो प्रश्न है उसके हिसाब से जो जजमेंट आता है, दैट इनवेरिएबली गोज अगेंस्ट द नेचर एंड एनवायरनमेंट. तो ये स्पोकन अबाउट द जुडिशरी, आई डिडंट वांट टू स्पीक टू एट सच public platform, but I would now like to mention a brief story. आपने पूछा कि कैसे बर्ड्स ऑफ लखनऊ ने लोगों को इंस्पायर किया. इसी काना वेटलैंड के पीछे there was a huge residential complex which was coming up, and there was a local advocate from Lucknow who had already filed a PIL which was actually under hearing. मैंने ये बुक्स कई लोगों को दिया. जुडिशियल में जो सीनियर वहाँ के जो जज थे, I had presented this copy to him and he was very happy. He knew me because I was also in Allahabad as collector Allahabad. He called me one day in the evening asking, Sanjay, are you free one day? We need to talk about something.
unofficially he spoke to me as a senior judge because he was presiding that bench which was hearing that PIL, and it took him just 1 month, almost every third day he was listing it. 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्होंने उस के प्ली को खारिज किया. उन्होंने कहा कि आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता. This kind of developments are required for So protecting. it's a matter, you're right, conserving every nature. sector, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, इंजीनियर्स हो, स्कूल कॉलेज के बच्चे हो, राइट फ्रॉम द यूथ, यंग चिल्ड्रन, इट हैज टू बी डन एट एवरी लेवल. सबको साथ लेकर के तो करना आपने पड़ेगा. कोर्ट की बात करी संजय जी, तो मैं कल की शाम की बात बताना चाह रहा हूँ कि एक हाई कोर्ट के जज ने कल मेरे को शाम को बताया कि आपकी बर्ड्स ऑफ इंदौर मैंने CJI साहब को दी. ही वॉज नोन टू हिम. तो CJI who is now retired about 2 years ago, he happened to be in the Indore bench of Madhya Pradesh High Court and eventually grew up to become the CJI. तो जब उनको ये 2 साल पहले किताब मिली तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इतने इंदौर में बर्ड्स देखे ही नहीं. तो वो हमारे बाकी जजेस जो वहाँ पर थे उन्होंने कहा साहब आप तो जजमेंट लिखने में लगे रहते थे, बाहर जाकर देखना चाहिए था आपको. दिस हैज एक्चुअली हैपेंड एंड ही वाज यस्टरडे इन भोपाल एंड वांटेड टू कम फॉर दिस सेशन बट नाउ ही हैज लेफ्ट. So I can tell his name. He was Mr. Bobde and he was the High Court judge in Indore, went on to become CJI. पर कहने का मतलब ये है कि यदि बर्ड्स की किताबें हम लिख रहे हैं, बर्ड्स के बारे में हम इतना समय बिता रहे हैं, एनवायरनमेंट बचाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो हम लोगों को मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को एम्प्लॉय करना पड़ेगा टू सेव दी नेचर. और चावड़ा साहब आज यहाँ पर हैं तो चीता मध्य प्रदेश में आ गया है, तो अब वी आर ए चीता लैंड, वी आर ए टाइगर स्टेट एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू बी ए बर्ड स्टेट. लेकिन बर्ड्स के लिए बहुत सारे अलग अलग काम करना पड़ेंगे. तो आखिरी सवाल नीरज जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब थोड़ा मतलब जो ये जो सुंदर दिखने वाले बर्ड्स हैं, जो थोड़े शाय हैं, थोड़े से अपना प्रोटेक्शन अलग तरीके से कर सकते हैं, वो तो लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है. लेकिन आजकल शहरों में कबूतर बहुत बढ़ रहे हैं और एक इन्वेजिव स्पीशीज़ के रूप में, और लोग उनको 5 रुपए में कुछ दाना खिला देते हैं. दिल्ली में आपने कनॉट प्लेस पे देखा होगा, लोग आते हैं, उनको लगता है पुण्य कमा रहे हैं, पर कबूतरों के कारण बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं. सो वुड यू लाइक टू कमेंट समथिंग ऑन दैट? तो रॉक पिजन जो अपना पहली चीज तो मैं कहूँगा कि बर्ड्स की वजह से इश्यूज आए. आई डोंट अंडरस्टैंड कि बर्ड्स कभी भी इश्यूज हो सकते हैं. मे बी देयर इज एन इम्बैलेंस, जो ट्रीज नहीं हैं, जो बड़े ट्रीज थे, कैविटी नेस्टिंग ट्रीज थे या बड़ी कैनोपी, बर्ड यूजुअली ऑब्जर्विंग अ बर्ड विल गिव यू अ लॉट ऑफ इम्प्रेशंस. बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं. बर्ड रूस्ट करती है बर्ड को ब्रीड करने के लिए, बर्ड को नेस्ट करने के लिए. एंड तो वी आर आई मीन इन ए काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे हम लोग पेड़ ट्रीज नहीं है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, सॉरी ग्रीन बेल्ट नहीं है. रॉक पिजन्स तो यूजुअली ट्रीज के अलावा ओल्ड बिल्डिंग्स में, पुरानी बिल्डिंग्स में पिजन्स हैं, आउल्स हैं, सब स्पेशीज जो वहाँ नेस्ट करती. पर फॉर रूस्टिंग आई थिंक अ बर्ड नीड्स अ ट्री फॉर रूस्टिंग, मास रूस्टिंग. मैंने आपको इसलिए प्रश्न पूछा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक गुजरात से एक कोई ऐसी टीम आई जिन्होंने उज्जैन में एक बर्ड टावर बनाया सीमेंट कंक्रीट का. उसके बाद इंदौर में बनना शुरू हुआ. तो आई हैड टू स्पीक टू द चीफ सेक्रेटरी एंड गेट एन ऑर्डर इशूड फ्रॉम द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दैट दिस काइंड ऑफ सीमेंट कंक्रीट बर्ड टावर, जिसमें बहुत सारे होल्स हैं, इसमें जाके बर्ड्स नहीं रहेंगे, तो उसमें कबूतर रह रहे हैं. तो हाँ, उस कैविटी में उन्होंने क्रिएट ही करी है ऐसी कैविटी. दिस इज रॉन्ग वे ऑफ, आई मीन आप ट्री वेल्थ को खत्म करके और इस तरह के जनरेट कर रहे हैं. दिस इज आई मीन दिस इज नॉट अ गुड साइन. क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जैसे मदर इज लाइक अस, हम अपने लिए बैलेंस डाइट सोचते हैं, तो एंड मच ऑफ द थिंग्स आर डिपेंड ऑन द सॉइल एंड क्लाइमेट. हमारे इशू एंड अप्रोच में जो गैप होता है वो ये सब चीज़ों को डेवलप कर रहा है. जो बहुत सी इन्वेजिव, आप इन्वेजिव क्या इंक्रीजिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं. इंक्रीजिंग नंबर्स भी है. कबूतर ये पिजन नॉट एन इन्वेजिव स्पेशीज, पिजन तो ऑलवेज लोकली स्पेशीज रहा है. नंबर्स आर इंक्रीजिंग, पिजन्स के हैं या मैनास के हैं, या ठीक है. सो सर्टेनली टू माई माइंड कि उनका जो नेस्टिंग प्लेस है या जो उनका कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो उनका अबॉर्ड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है. दैट इज़ वाई we are seeing the higher numbers. So thank you for this wonderful session. This anchor is indicating me for the next session. The panelists have arrived. So thank you Sanjay Kumar ji, thank you Neeraj ji, thank you Bhalu ji for this wonderful talk. I would not have liked to end it so early, but there is always a time because bird has to fly. So thank you very much. It was indeed a very informative session, sir. We are extremely honored to have you all with us. Now, may I please invite to the dais
Miss Richa Sinha ma'am to please come forward and felicitate our speakers with a memento as a token of our love, respect and gratitude. You will be happy to see this memento from the Bhopal Literature Festival. I'd like you to note that this memento is also the mascot of Bhopal Literature Festival 2023. It is a picture of a highly endangered bird, lesser flourishing, Bhalu Mondhe, sir. Thank you. So this is being given to all the panelists with the hope that this endangered मेरे को कोई दे ही नहीं रहा है बालू जी को दिया बालू जी का फोटो बालू जी को